सर, मेरा ताल्लुक़ FM 98 दोस्ती चैनल से है। जैसे कि हम जानते हैं, आप हमेशा खेलों और वर्जिश के ज़रिए सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी बरकरार रखते हैं। इस हवाले से आप चीनी अवाम को क्या मशवरा देना चाहेंगे? चाइना के अंदर ये जो हमने देखा है कि एक तब्दीली आई है चाइना में। एक तो लोगों को गुर्बत से निकाला उन्होंने, लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर चाइना कभी भी इतना आगे नहीं था दुनिया में जितना अब पिछली 2-3 ओलंपिक्स में चाइना की परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रेसिव रही है। तो इससे वाज़े होता है कि वहाँ बड़ी तवज्जो दी जा रही है अब स्पोर्ट्स की तरफ और फिटनेस की तरफ। दूसरा मेरा सवाल ये है कि हुकूमत पाकिस्तान मुल्क की तरक्याती हिकमत अमली को जियो पॉलिटिक्स से जियो इकनॉमिक की तरफ मुंतकिल कर रही है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन पाकिस्तान स्ट्रेटजिक और इक़्तिसादी ताउन से आपकी क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं? देखिए, चाइना ने गुर्बत कम कैसे की? चाइना ने गुर्बत ऐसे कम की कि उन्होंने अपनी इकॉनमी को ग्रो किया। जो ग्रोथ रेट जैसी जैसी उनकी बढ़ी, तो उन्होंने उस ग्रोथ रेट से लोगों को गुर्बत से निकाला। अगर आपने गुर्बत से लोगों को निकालना है, तो जब तक आपकी इकॉनमी ग्रो नहीं करेगी, वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी, तो आपके पास किधर से पैसा आएगा नीचे से लोगों को ऊपर उठाने के लिए? तो चाइना ने यही किया कि उन्होंने अपनी इकॉनमी के ऊपर तवज्जो दी, लेकिन ग्रोथ को फिर जब उनकी दौलत बढ़ी, तो उन्होंने ये नहीं किया कि वो थोड़े से लोगों के पास पैसा चला गया फिर उन्होंने वो नीचे दिया। तो हमारी भी यही कोशिश है कि जब हम जियो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो हमारा मकसद ही ये है कि अब ज़ोर हमने देना है अपनी इकॉनमी को बढ़ाने के लिए। और जैसे जैसे यानी इसका ये नहीं मतलब कि सिक्योरिटी के ऊपर हम तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन हम ख़ास तवज्जो जो हमने बदकिस्मती से पहले नहीं दी अपनी इकॉनमी के ऊपर तवज्जो, हमारी अब ख़ास कोशिश है इकॉनमी पे हम ज़ोर लगा रहे हैं, ताकि जैसे जैसे मुल्क के अंदर हमारी दौलत में इजाफा होगा, हम फिर अपने लोगों को गुर्बत से निकालें। I'm Shipu Hao from Economic Daily. And my first question is, now, as the new phase of CPEC development focuses on encouraging business and benefiting local people, what is your government going to do to facilitate it? What do you expect for the sustainable development of CPEC? And any expectation for more cooperation on renewable and clean energy? Thank you. You see, the first phase of CPEC was basically connectivity and power generation. Now the CPEC has moved into the next stages where it's about relocation of industry. We want to develop our industrial zones, our special economic zones. Then we want, especially in agriculture, we want help there to improve our productivity. Because in China, the productivity is much higher in agriculture and livestock yields compared to Pakistan. So we want help there too. And then China has grown these drought-resistant cotton varieties, which we have large tracts of lands in Pakistan where this variety of cotton can be grown. So that's where we're going to get help from China. But also it's in technology, information technology. That's another area which is basically the future. Is the technological revolution in the world is the future. And China has made great strides in that, and so we also want to get help from China in that field. Thank you. And my second question is, now, some Western countries keep telling lies on so-called Xinjiang issues, but actually, many Pakistani people, scholars, journalists, including Ambassador to China, His Excellency Moin Haq, has visited Xinjiang for many times. They saw the place with their own eyes and talked a lot about it. Have you heard of them talking about Xinjiang? And what do you think of lies told by those Western countries? There is a lot of criticism about the treatment of Uyghurs by China in the West. But our ambassador went there, Moinul Haq, who's our ambassador in China. We asked him, and he went there, and he sent us information that this is actually not true on the ground. But what we in Pakistan find it very difficult to swallow is that while they talk about Uyghurs, they do not talk much in the West about Kashmir. Because in Kashmir,
the worst violations of human rights are taking place by India. And somehow there is selective silence about human rights in Kashmir, where there's something like 9 million people who are, really basically living in the worst conditions in almost an open prison by these 800,000 Indian troops. So we find it very difficult that while on one side they talk about Xinjiang, but on the other hand there is the silence about Kashmir is deafening for us. And these double standards is what we in Pakistan find it difficult.